discussion is being streamed properly on my other device, where I will keep looking to check your comments of live audience. Okay. Where I will keep. Okay, so it's being streamed properly. So let's begin. People will join in during the course of this discussion. So welcome everyone. My name is Bhavuk Pujara, and today we're going to discuss this chapter, Coordinate Geometry, for IIFT 2019. Okay, this is a live class I'm taking on YouTube for Unacademy. Agenda for today's discussion is these 10 topics: how to plot XY, distance formula for 2 points, for 3 points, for centroid formula, in-center formula, circumcenter formula, section formula, area of triangle, slope of line, and finally equation of line using slope. All these things we're going to discuss today. The first one, how to plot XY, very basic. We draw an XY plane, a horizontal axis, a horizontal line we draw from minus x to plus x, and then a vertical line from plus y to minus y, right? And wherever it intersects is called the origin. This origin coordinates are 0, 0. Now these two lines, the intersection between these two lines, divide the whole plane, the whole XY plane into 4 quadrants. Top right you see the first quadrant, top left you see the second quadrant, bottom left you see the third quadrant, bottom right you see the fourth quadrant. Top left has positive of x value and positive of y value. Therefore, in first quadrant, the coordinates are both plus plus, both positive. The second quadrant, that is top left, you see x is negative and y is positive. In the third quadrant, bottom left, as you see, both x and y are negative. In bottom right, you see x is positive but y is negative. So these are 4 quadrants, as we call them, on an XY plane. Now let's denote this coordinate xy. What does this mean, xy? X is called the abscissa, y is called the ordinate. Abscissa is the point on x-axis and ordinate is the point on y-axis. On a particular x-axis, for example, if I draw this xy plane and this x-axis as you're looking at, if I plot a point on this, if I put a point on this, my abscissa value, that is x value, is going to hold some value, but my ordinate value is going to be 0 because y is equal to 0 here. Likewise, on this y-axis, on this vertical line, if I put a point anywhere on this vertical line, my abscissa value is going to be 0 and my ordinate value is going to be that particular value where the point lies. Okay, so this is what this point is talking about. Okay, so a coordinate is represented as x comma y, where x is the abscissa and the later part y is called ordinate. That is the point on y-axis. For example, let's plot minus 1 comma minus 2. What you do is you first plot minus 1 comma 0, minus 1 on x-axis, that is abscissa is minus 1. Okay, and ordinate is 0. This is where the point lies. Then you plot 0 comma minus 2. This is where the point lies. That is the ordinate is minus 2. Abscissa is 0. Then draw a vertical and a horizontal line out of these 2 points. Wherever they intersect, this is where they intersect. This point is called minus 1 comma minus 2. Okay, pretty simple. Something we have done in our primary, in our secondary school. Distance formula for 2 points. Suppose I give you 2 points with coordinates x1 comma y1 and b x2 comma y2. A and b are 2 points. And I ask you what is the distance between these 2 points. Okay, this is coordinate geometry. Why? Because we're talking about these 2 points in terms of their coordinates.
So the distance between these 2 points A and B will be equal to under root of x1 minus x2 ka square plus y1 minus y2 ka square. So you take the difference of the abscissa, square them, take the difference of the ordinates, square them, and then take under root of their sum. Pretty simple formula. We all have done this while we were preparing for our CAT exam also. Okay, just a quick revision of these important concepts. For example, the question is find the distance between A 2, 3 and B 3, 2. How will you do that? Two coordinates here, 2, 3 and 3, 2. 2 points represented as A and B. You have to find out the distance between them on the xy plane. AB, the distance is going to be calculated as under root of abscissa ka difference ka square, that is 2 minus 3 ka square, plus ordinate ka difference ka square, that is 3 minus 2 ka square. It's going to give you under root of minus 1 square plus 1 square, that is under root of 1 plus 1, which is under root of 2. Okay, so the distance between A and B here is under root of 2 units. Now if 3 points are collinear, for example, instead of 2 points, we talk about 3 points. What is collinearity? When I say that 3 points are collinear, that means all these 3 points lie on the same line. So if I draw a line passing through any 2 of the points, it will also pass through the third point, is what collinearity concept means here. That means 3 points lie on the same line. When this is the case, then what happens is the point that is in between the other 2 points, the distance between the first and the second point, and the distance between the second and the third point, their sum is equal to the distance between the first and the third point. So in this case, AC plus CB will be equal to AB. So this is also one of the ways to find out if 3 points are collinear or not. That is, find out the distances AC, CB and AB, and then find out if sum of any 2 distances is equal to the third distance. If yes, then 3 points are collinear. For example, you have to find out if 3 points 2, 4, which is A, then B 4, 6, and then C 6, 8 are collinear or not. What you're going to do is use distance formula to find AB, to find BC, to find CA. Okay? Then you're going to realize that, you're going to observe here that AB is 2 root 2 using distance formula. AB is 2 root 2, BC is 2 root 2, and AC is turning out to be sum of AB and BC. Okay? That means A, B, C lie on the same line, with A and C on the extreme points, on the extreme ends, and B in the middle, in between A and C. Okay? So this is going to be B, this is not going to be C here. Right? Chaliye. This is one of the ways to find out if 3 points are collinear or not. Distance formula, 3 points. Find if 3 points form a triangle. Now, when will 3 points form a triangle? When these 3 points are not collinear. Therefore, they don't lie on the same line. Triangle is only formed by 3 points with these 3 points as vertices if and only if these 3 points are not collinear. Types of triangles that can be formed are equilateral triangle, that means all 3 sides are equal. Isosceles triangle, that means 2 sides are equal, not equal to the third side. Right angle triangle, that is Pythagoras theorem follows here. AB square plus BC square is equal to AC square. Then scalene triangle, that means all 3 sides are not equal to each other. No 2 sides are equal to each other. Okay? A right angle triangle can be a scalene triangle. A right angle triangle can be an isosceles triangle too. Let's do an example. Find if 3 points A 1, root 3
B 0, 0 and C 2, 0 are collinear or not? If not, which type of triangle do they form? To find out the collinearity, what do? We find out the distances AB, then BC, then AC. We see if the sum of any two distances is equal to the third distance. Here we find out that AB is 2, BC is 2, AC is 2. The sum of any two distances is not equal to the third distance because all three distances are equal. Therefore, these 3 points, first of all, are not collinear, is something we have established. Second thing is that they're going to form a triangle. What kind of triangle? All three sides are equal. Therefore, these 3 points are forming an equilateral triangle. This is what the triangle will look like. Okay. Moving on to the next concept. Centroid. Point of intersection of medians of a triangle. When from a vertex of a triangle, you draw a median on the opposite side. What is a median? That divides a side into two equal halves. Then that is called a median. Okay. Now where all these medians intersect, they intersect at a unique point. Where all these medians intersect is called a centroid. The coordinates of centroid are given as average of the abscissa of the vertices is the abscissa of the centroid, and average of the ordinates of the vertices is the ordinate of the centroid. As you can see in the diagram also, x comma y is what we have to find out. So x here, this x here will be equal to x1, that is abscissa of vertex A, abscissa of vertex B, abscissa of vertex C. Add them all, divide by 3. This ordinate y will be equal to y1, that is ordinate of vertex A, y2 ordinate of vertex B, plus y3 ordinate of vertex C. Add them all, divide by 3. This is what the coordinates of centroid look like. In center, what is in center? The point of intersection of angle bisectors of a triangle. When you're drawing a line from a vertex onto the opposite side and this line bisects this vertex, right? That's an angle bisector, right? How to find out the coordinates, and first of all, where all these angle bisectors intersect is called in center. Okay. In center के coordinates can be found out by using this formula, which is a into x1. What is a? What is b? What is c? Let's find out. So capital A is a vertex of the triangle. The small a is the side of the opposite side. The length of the opposite side. Capital B is a vertex of the triangle. The small b is the length of the opposite side to vertex B. Small c is the length of side to the vertex C. Okay, so the coordinates of in center are x comma y is equal to this side into opposite vertex ka abscissa, that is a into x1 plus b into x2 plus c into x3 divided by sum of the sides, that is a plus b plus c. Likewise, ordinate of in center can be given as a into y1 plus b into opposite vertex ka ordinate is y2 plus c into ordinate vertex ka ordinate, opposite vertex ka ordinate, which is y3 plus c into y3. This is what we have done here. Divided by sum of sides, which is a plus b plus c. Okay. चलिए, next circumcenter.
What is circumcenter? It's the point of intersection of perpendicular bisectors of triangle. When you draw a perpendicular, from a vertex, when you draw a perpendicular on the opposite side, that also bisects the angle. Okay? And where they intersect is called the circumcenter. So from this circumcenter, that is Z, you can draw a circle which will pass through all the vertices. Okay? So in that case, ZA, ZB, ZC, they all become equal to the radius of that circumcircle. So ZA is equal to ZB is equal to ZC. Using distance formula, you can find out ZA. So for example, coordinates of A are given to you, coordinates of B are given to you, coordinates of C are given to you. Coordinates of circumcenter have to be found out. Using distance formula, you can find out ZA, right? It will become an equation, a linear equation in two variables. Then you can find out ZB, another linear equation in two variables. Then you can find out ZC, another linear equation in two variables. Equate any two. For two variables, you have to equate any two equations and the answers, the values of those two variables can be found out. Solve those equations and you'll get the value of Z. The coordinates are XY. For example, let's do some example based on this learning of centroid in center and circumcenter. Find the coordinates of centroid of a triangle with given vertices. Vertices are A minus 1, 2, B minus 2, 5, C 3, 0. So there are three vertices given to me and I have to find out the coordinates of the centroid of this triangle. Simple formula. The first formula that we learned for centroid, it was that the abscissa of the centroid is going to be equal to the average of the abscissa of the vertices. The ordinate of the centroid is going to be the average of the ordinates of the vertices. Therefore, x here, if the coordinate of centroid be taken as x, y, they will be calculated as x1 plus x2 plus x3 upon 3, comma, y1 plus y2 plus y3 upon 3. That is minus 1, minus 2 plus 3 upon 3, comma, 2 plus 5 plus 0 upon 3. Answer is going to be 0 by 3, 7 by 3, which is 0, 7 by 3 eventually. What is 0, 7 by 3? It is the coordinate of the centroid of this triangle that we are questioning. Very simple. I'm going to leave the session open for any doubts, any questions, if people are there as active audience. Okay, I'm going to be back in a minute. All right, I'm back. Chaliye. Next concept, next topic is section formula. For example, you have 2 points given to you.
with two coordinates, A x1, y1 and B x2, y2. And there's a point in between A and B, that is C. Okay. In this case, let's assume that C is a midpoint of AB, the line drawn by joining these 2 points A and B. Okay. The coordinates of this midpoint are going to be the average of the abscissa and the average of the ordinate. So the abscissa of this midpoint is going to be average of the abscissa of the 2 points, the extreme 2 points, that is A and B, and average of the ordinate of these extreme 2 points. So x3, y3, that is C x3, y3 is going to be equal to x1 plus x2 upon 2, comma, y1 plus y2 upon 2. Let's do an example. Given z 3, minus 1 is a midpoint of line x 5, 2 and y a, b. Find values of a and b. X 5, 2 and y a, b. There's a line joining these 2 points, x and y. And z 3, minus 1 is a midpoint. You have to find out the values of a and b. Using the section formula for midpoint, we know that this 3, that is the abscissa of the midpoint, is equal to the average of the abscissa of these extreme points. So 3 is equal to 5 plus a upon 2. And this minus 1, that is ordinate of the midpoint, is equal to the average of the ordinates of these extreme 2 points. That is minus 1 is equal to 2 plus b upon 2. Therefore, a turns out to be 1 and b turns out to be minus 4. That's the answer. Pretty simple. Now let's assume that this point that we just talked about in between these 2 extreme points is not the midpoint, but it is dividing this line internally in the ratio m is to n. Okay, so there are 2 points x with coordinates x1, y1 and y with coordinates x2, y2. So this is B here. And C is in between or on this line xb, which divides this line in the ratio m is to n. Now section formula for internal division, that is the coordinates of this point C, x3, y3 is going to be this ratio m multiplied by abscissa of the opposite point, that is x2, plus this n into abscissa of the opposite point, which is x1, divided by m plus n. Likewise, ordinate of this point C is going to be m into ordinate of the opposite point, which is y2, plus n into ordinate of the opposite point, which is n1, divided by m plus n. Pretty simple. Let's do an example. Point C internally divides line AB in the ratio 2:1. What are the coordinates of C? Given A is, the coordinates of A are 1, minus 2 and B are 3, 5. Okay, so C, so this is what the diagram looks like. C is a point on the line AB. This is not X, but this is A. Okay, where A k coordinates are 1, minus 2 and B k coordinates are 3, 5. And C is dividing this line in the ratio 2:1. Okay, so coordinates of C would be 2 into 3 plus 1 into 1 upon 2 plus 1, comma 2 into 5 plus 1 into minus 2 upon 2 plus 1. Answer will be 7 by 3, 8 by 3. So this was internal division. But what if this point C was not dividing the line internally but externally? Okay, so XC is still, or AC is still M and BC is still N. In this case, internal division also, XC was M and CB was N. In this case also, XC is M and BC is N. So external division is happening in the ratio M is to N. Section formula for external division, nothing changes but the sign in between. Instead of plus, we have a negative now. So M into X2 minus N into X1 upon M minus N, comma M into Y2 minus N into Y1 upon M minus N. Let's do an example. Point C externally divides the line AB in the ratio 4:3. What are the coordinates of C? Given A is 2, 1 and B is minus 3, 2.
Let's see. Coordinates of this point C would be 4 into minus 3 plus 3 into 2, sorry, minus 3 into 2 upon 4 minus 3, comma, 4 into 2 minus 3 into 1 upon 4 minus 3. Pretty simple. Answer is going to be minus 18, comma 5. Next concept, area of triangle. Triangle is formed only when 3 points are not collinear. We understood that. Okay. And if it is given that 3 points are collinear and you have to find out the area formed by these 3 points, area of the triangle formed by these 3 points, you can clearly say that the area is going to be 0 because these 3 points are collinear. They lie on the same line and thus they don't form any triangle. So therefore the area would also be 0. So there are, for example, the 3 non-collinear points A, B and C with coordinates x1, y1, x2, y2 and x3, y3. Area of triangle ABC can be calculated as using this matrix. It looks complex, but it is not. Half of modulus of, write down x1, x2, x3, x1 this way. Then on the right, write down y1, y2, y3, y1 this way. Draw the arrows from x1 to y2, x2 to y3, x3 to y1, up to down, top left to bottom right. Okay. Then draw bottom left to top right. That is x2 to y1, x3 to y2, x1 to y3. Okay, so area is going to be half of modulus of this x1, y2 plus x2, y3 plus x3, y1 minus of, in the bracket, x2, y1 plus x3, y2 plus x1, y3. Pretty simple. If you look at it this way, things are going to be very easy. Now, if the area turns out to be positive, that means these 3 points that we are talking about, the 3 points in discussion, are non-collinear because they're forming a triangle. But if the area formed by these 3 points is 0, then that means these 3 points are collinear. Okay? Sorry. Example, find the area of triangle ABC given that coordinates are minus 1, 2 for A, minus 2, 5 for B, 3, 0 for C. We'll write down x1, x2, x3 and then x1 again. So minus 1, uske niche minus 2, uske niche 3, uske niche minus 1 again. Then on the right hand side of this matrix of this modulus, I'll write down 2, uske niche 5, uske niche 0, uske niche 2 again. Then draw these arrows and use the formula to find out the answer. The answer turns out to be 5 square units. Modulus of minus 5, which turns out to be 5 only. Okay, so the area of this triangle is 5 square units, thus formed by these 3 points with these respective coordinates. Okay, so I'm going to keep the session open for a few seconds for people to get back to me if they have any doubts on what we have discussed so far. We have discussed these 8 topics under coordinate geometry as yet. Area of triangle, then section formula for internal and external division, then circumcentric formula, then incentric formula in terms of coordinate geometry, then centroid formula. Then we discussed distance formula for 3 points, distance formula for 2 points, and how to plot x, y. Okay. If you have any doubts, if you have any active audience, please let me know. Excuse me.
No doubts? No questions? Okay. Let's move on to the next topic then, slope of line. This is also an important concept in coordinate geometry. Remember that tangent of angle made by line on positive direction of x-axis is also called the slope of a line. We have Vinay. Okay, Vinay is asking a question. So actually within the time limit I can solve only 6 to 7 problems in quant for IIFT previous year. Acha. So you're discussing IIFT ka strategy, preparation strategy or attempt strategy. Okay. Vinay, I'll tell you what. It is because you're not strategizing properly. ठीक है, मैं अगर आपको strategy बताऊंगा IIFT की, and if you strictly follow this, trust me, you'll end up with 45 kind of score. ठीक है, what you do is, first of all, पहले का जो 2-3 मिनट होगा, read what the instructions are saying कि कौन सा section कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चन का, कितने नंबर का एक क्वेश्चन है इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. फॉर एग्जांपल DI का क्वेश्चन 1 नंबर का है, LR का 1 नंबर का है, QA का 1 नंबर का है, RC का 0.75 का है, VA का 0.75 का. ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं फर्स्ट पेज पे. ठीक है, पहले 2-3 मिनट आपने स्पेंड करे इसमें. नेक्स्ट 5 मिनट आप स्पेंड करें जीके सॉल्व करने में. ठीक है, जीके में आपके पास आएंगे कुछ 18 से 20 सवाल, और जीके जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि या तो आपको आंसर आता है या तो नहीं आता. एक क्वेश्चन पे अटके रहने का कोई फायदा नहीं है जीके में. इट्स आइदर ब्लैक और वाइट, देयर इज नो ग्रे एरिया कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं सॉल्व कर लूंगा, या अगर कोशिश करूँ तो मेरे से सॉल्व हो जाएगा. ये क्वांट का क्वेश्चन नहीं है, ना ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये जीके का क्वेश्चन है. या तो आपको आता है या आपको नहीं आता. तो 5 मिनट से ज़्यादा, 6 मिनट से ज़्यादा आप जीके सेक्शन में स्पेंड ना करें. से 7-8 मिनट भी दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि यू आर स्लो इन रीडिंग. ठीक है, तो अब क्या हुआ, 10 मिनट आपके निकल गए. फिर आता है आपके पास सेक्शनल कट ऑफ का प्रेशर. सबसे पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले 40 मिनट या 45 मिनट, 40-45 मिनट वुड बी मोर देन इनफ. आप क्या करें, हर एक सेक्शन के 5-5 सवाल सॉल्व करें. ठीक है, 5 सवाल सॉल्व करना हर एक सेक्शन का. जब आपके पास सेक्शन कितने हैं, 6 सेक्शन है टोटल. जीके आपकी सॉल्व हो चुकी है, 5 सेक्शन बचे आपके पास. इसका मतलब आप हर सेक्शन को 8 से 10 मिनट दे सकते हैं. 40 से 50 मिनट आप लगा सकते हैं टोटल टू क्लियर दी कट ऑफ. अगर आपने हर सेक्शन के 5-5 सवाल सॉल्व कर लिए और इजी लेवल सवाल सॉल्व कर लिए, आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई हर सेक्शन की. ठीक है, क्योंकि कट ऑफ यूजुअली 20 नंबर में से 2 नंबर कट ऑफ होती है, 3 नंबर कट ऑफ होती है, 3.5 नंबर कट ऑफ होता है. कट ऑफ इज नॉट रियली ऑन द हायर साइड. ठीक है, पहला आपका 50 मिनट या 1 घंटा स्पेंड हो गया सब सेक्शन के 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने में. 5 सेक्शंस हैं फॉर एग्जांपल, 6 सेक्शंस हैं इंक्लूडिंग जीके आपके पास, और आपके पास नंबर आपके पास आपने स्कोर कर लिए 27 से 28. ठीक है, 1 घंटा हुआ, इजी क्वेश्चन आपने सॉल्व करे. एक आरसी सॉल्व करी फॉर एग्जांपल, वीए के क्वेश्चन 5 इजी वाले सॉल्व करे, पैरा जंबल या कुछ भी सॉल्व कर लें, उठा लें. डीआई का 1 सेट सॉल्व करा, एलआर का 1 सेट सॉल्व करा, क्यूए के 5 सवाल सॉल्व करे. 1 घंटा आपका बीत गया और आपके मार्क्स आ गए हैं 27-28 ऑलरेडी. अब नेक्स्ट घंटा जो आप स्पेंड करेंगे वो आप किस पे स्पेंड करेंगे, टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. ये मैक्सिमाइजेशन हर सेक्शन से नहीं आएगी, ये मैक्सिमाइजेशन आएगी आपकी स्ट्रेंथ सेक्शन से. आपका स्ट्रेंथ सेक्शन हो सकता है एलआर, आपका स्ट्रेंथ सेक्शन हो सकता है आरसी, या फिर डीआई. डीआई समथिंग आई वोंट सजेस्ट कि आईएफटी का आप 2 से ज्यादा सॉल्व करें डीआई. ठीक है, इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम. बहुत ही आई वुड से कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआईज आते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस ना करें. 2 या मैक्सिमम 3 डीआईज आप सॉल्व करें, उससे ज्यादा ना करें. ठीक है, तो जब सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो गई, अब आपको टेंशन नहीं लेनी कि आपको इस सेक्शन में फिर से आना है. आने की जरूरत ही नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपका वीक एरिया है तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन कमिंग टू दैट सेक्शन अगेन. फर्स्ट गो टू दैट सेक्शन वेयर यू थिंक योर स्ट्रेंथ लाइज, राइट. आरसीज अगर आप पढ़ेंगे आईएफटी की, दे आर वेरी इजी. आरसीज इजी इन अ वे कि आप क्वेश्चन पढ़ें और कीवर्ड्स निकालें क्वेश्चन में से, उसको स्पॉट करें, आरसी में से आंसर निकल आता है. ठीक है, सो क्यों ना आरसीज को पहले सॉल्व कर लें.
ठीक है, 16 नंबर की आरसी आती है, 5 सवाल आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, मतलब 3 साढ़े 3 नंबर आप पहले पक्के कर चुके हैं, कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं। अब आप वापस आरसी पे आए, सारी आरसी क्लियर कर लें, 10 नंबर और ले लें। ठीक है, 28 का अगर आप 10 नंबर भी चलो ना ले पाए, अगर आप 6 नंबर और ले लें, 5-6 नंबर और ले लें, आपके नंबर हो गए 35 से 34, 34 से 35, राइट, विच इज लाइक क्लियरिंग दी ओवरऑल कट ऑफ। और आपने अभी तक कितना टाइम स्पेंड करा है? 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट, चलिए वर्स्ट टू वर्स्ट केस। ठीक है, अब आपके पास तब भी 40 मिनट बचते हैं। अब आप क्यूए पे वापस चले जाएं या वीए पे वापस चले जाएं या एलआर पे वापस चले जाएं, इट्स अप टू यू। द प्रॉब्लम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट व्हेन वी पीपल अपीयर फॉर आईएफटी पेपर, अपन का माइंडसेट अभी भी कैट वाला है। ठीक है, बट आईएफटी इज नॉट कैट एग्जाम, इसमें आप एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको हर एक मिनट का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। 5 मिनट कहाँ टाइम स्पेंड हुए, 10 मिनट कहाँ टाइम स्पेंड हुए, 20 मिनट कहाँ टाइम स्पेंड हुआ, इन सब चीज़ों का आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और इस चीज़ की हैबिट डालनी पड़ेगी। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आएंगे, ट्रस्ट मी, दे वोंट बी वेरी टफ। और जब आप बाहर निकलेंगे एग्जाम हॉल से, आपको लगेगा कि यार ये, मतलब अगर मैं टाइम बॉक्स ना करता इसको, तो ये तो काफ़ी ईजी सवाल था, काफ़ी ईजी पेपर था। और वो भी समझते हैं ये बात को। द रीज़न दे कट ऑफ इज ओनली 34-35%, क्योंकि उनको पता है कि इस पेपर को इस टाइम फ्रेम में सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तभी लोगों के 50% से ऊपर नहीं आते। 45-50 इज द हाईएस्ट स्कोर, दैट इज हाफ ऑफ द पेपर इफ यू सॉल्व इज बीइंग द टॉपर फॉर IIFT in IIFT exam. Why? Because they understand this is not just an aptitude exam, this is a test of your management skills, time management, your temperament management, choosing the right question, चेंज मैनेजमेंट, पैटर्न चेंज हुआ तो आपने उस चेंज को कैसे अडाप्ट करा, एंड थिंग्स लाइक दैट। तभी तो लोग 50% पे टॉप कर जाते हैं IIFT में। तो आप इस माइंडसेट से जाएं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट केस सिनारियो 50% से ज़्यादा पेपर सॉल्व ही नहीं करना है। आप माइंडसेट इससे जाते हैं कि आप 100% पेपर देखना चाहते हैं, पूरा पेपर देखकर फिर सॉल्व करना चाहते हैं, वो माइंडसेट ना लेकर जाएं। आई होप इट मेक्स सेंस विनय। The reason you're getting confused, the reason you're not able to solve a lot of questions, because in your mind, the back of your mind is still running कि यार आगे क्या होने वाला, आगे वाला क्वेश्चन भी देख लूँ मैं, क्या पता वो इजी हो, क्या पता वो डिफिकल्ट ना हो उससे, और थिंग्स लाइक दैट। Hi Saloni, good afternoon. So we were discussing some IIFT strategies, how to attempt this paper IIFT. I've taken like 2-3 sessions already before, and people are still confused about how to take this paper. Vinay is saying that he got 29.36 last year. He could clear all the sectional cutoffs but couldn't clear the overall cutoff because, as I said, Vinay, first 1 hour, 50 minutes or 1 hour should be spent only in clearing the cutoff, sectional cutoff. उसके बाद if you ask me कि मैं maximize कहाँ पे करूँ score, I can't tell you because I don't know what your strength area is. आपका strength RC हो सकता है, आपका strength QA हो सकता है, LR हो सकता है. That is something you'll have to figure out yourself. तो पहले 1 घंटा आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करें, सबके 5-5 6-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लें इजी लेवल, सेक्शनल कट ऑफ की टेंशन हटा दें दिमाग से। उसके बाद 6 सेक्शन में से 3 सेक्शन में वापस जाएं और मैक्सिमाइज करें अपना स्कोर। ठीक है, समझ में आ रहा है विनय? So Saloni, we are discussing this chapter, coordinate geometry, which is an integral part of geometry and which appears in these exams that you mentioned, TIS and CMAT. Okay, you can watch the recording of this session. We have discussed first 8 points, first 8 topics of coordinate geometry. This is the last topic, slope of line, that we're discussing. In between, Vinay asked this question about IIFT preparation. Not preparation, but exam attempt strategy. The reason I took up that topic and started discussing that. Okay, chale, let's resume. Slope of line is a tangent of angle made by line on positive direction of x-axis. For example, you see this line on the screen, right? The angle this line is making with the positive direction of x-axis, uska agar aap tangent lenge, tan lenge, is going to be your slope of this line. तो स्लोप ऑफ लाइन मेजर्स द स्टीपनेस ऑफ अ लाइन, कितना टेढ़ी या कितनी सीधी है लाइन एज कंपेयर टू एक्स एक्सिस. इट इज अ चेंज इन y फॉर अ यूनिट चेंज इन x along the line. It is denoted by small m.
angle theta, that is your tan of this angle theta is going to give you the slope of the line. अगर आपके पास दो पॉइंट दिए गए हैं, A with coordinates x1 y1 and B with coordinates x2 y2, और आपको निकालना है स्लोप ऑफ दिस लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, राइट? सो एक ही लाइन पास होगी, वो लाइन कहीं ना कहीं कट करेगी एक्स एक्सिस को और एंगल बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, राइट? तो उस लाइन का स्कोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको पूछा गया स्लोप बताइए इस लाइन का, आप क्या करेंगे? उनके ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लेंगे, डिवाइड करेंगे उनके एब्सिसा के डिफरेंस से. इज गोना बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन formed by those 2 points. Something very important we're going to discuss now. If two lines are parallel, their slopes are equal. If two lines are perpendicular, the product of their slopes is -1. अगर आपके पास एक इक्वेशन है लाइन की ax plus by plus c equal to 0 और आपको स्लोप पूछा गया है, तो आप कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y. ठीक है, सो कितने सारे तरीके हमने जान लिए एक स्लोप निकालने के लिए एक लाइन का. अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं. इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू 2. व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन 2? अब हमें पता है व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अभी हमने पढ़ा जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है -1. ठीक है, so m1 into m2, that is slope of line 1 multiplied by slope of line 2 is equal to -1. Now slope of line 1 is given to me as 2 in the question, right? That means 2 into m2, that is slope of line 2, is equal to -1. That is m2 is equal to -1 upon 2. Very simple. CMAT, TISNET जैसे एग्जाम्स में ऐसे सवाल आते हैं straight away. All you need to recall is the formula and the concept. These exams that you're mentioning, Saloni, these are not like CAT level exams. Okay, and the kind of questions asked are, I would say LOD1, that is easy level questions. Okay, so such a question can directly appear in TISNET and CMAT. कि भाई बताइए, हम आपको बता रहे हैं दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, एक लाइन का स्कोप है 2, दूसरी लाइन का स्लोप बताइए. सिंपल फॉर्मूला आपको रिकॉल करना होगा और आंसर निकालना होगा. Therefore, slope of these two lines in discussion are 2 and -1 by 2. Okay? Any doubts? Anyone? I understand there's a lag in communication here. When I speak, it reaches to you in 15 seconds, 15 to 20 seconds. So I'm going to wait for a couple of seconds for people to ask me any doubts, if any. Thank you for your class. It helps a lot for poor students like me who can't afford to take coaching classes. Oh, sure, you're welcome, Vinay. Anytime. Come more often to these classes. Make the most out of these offerings that we have for you. YouTube sessions हैं हमारे पास, special classes हैं, right? अगर आपको और one-on-one touch point चाहिए तो मैं आपको suggest करूँगा कि plus subscription के बारे में पढ़ें Unacademy पे, ठीक है? जहाँ पे बहुत ही nominal fees से आप access ले सकते हैं and you and I can connect at a more, I would say, better level. ठीक है? अपने comments, मैं अपने कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बनाता हूँ आप लोगों के लिए. यू कैन अटेंड दोज कोर्सेज. यू कैन सजेस्ट कि आपको कैसे कोर्सेज चाहिए. कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं आप उस कोर्सेज में आके, किसी भी प्रकार के डाउट्स, राइट? तो दोज प्लस कोर्सेज आल्सो वेरी यूजफुल. अगर आप पढ़ेंगे उस प्लस कोर्सेज के बारे में, प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, और अगर आप और जानना चाहेंगे आप मेरे को कॉन्टैक्ट करें अनअकैडमी पे, ठीक है? और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए तो आई वुड सजेस्ट हाईली कि आप वैसा कोई प्लस सब्सक्रिप्शन 1 महीना या 3 महीना या 6 महीना के लिए ले लें, ताकि अपन दोनों और अच्छे लेवल पे बात कर सकें. नॉट इवन यू एंड मी, नॉट जस्ट यू एंड मी, यू कैन कनेक्ट विद ऑल अदर एजुकेटर्स हु आर देयर फॉर CAT
and other related exams. ठीक है, मेरा कूपन कोड है भावुक पुजारा, that is my full name. If you want to buy a plus subscription, that will help you get additional 10% discount. और जानने के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं Unacademy ऐप से, अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं तो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग स्लोप. 1 पॉइंट फॉर्म. आपको इक्वेशन बनानी है एक लाइन की जब आपको स्लोप दिया गया उस लाइन का. तो एक पॉइंट आपको दिया गया, एक कोऑर्डिनेट दिया गया और बताया गया है कि एक लाइन है जो कि इस पॉइंट के थ्रू पास हो रही है और इस लाइन का स्लोप है m. बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या है. ये हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. x1 y1 दिया गया है हमें क्वेश्चन में, m भी दिया गया हमें क्वेश्चन में. सो ये इक्वेशन बन जाएगी x और y के फॉर्म में. 2 पॉइंट फॉर्म. आपको दिए गए हैं दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है आपको कि इक्वेशन बताइए इस लाइन की जो कि पास होती है इन दो पॉइंट से. दो पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल 2,4 या फिर 2,4 इज 1 पॉइंट एंड -3,-1 इज अनदर पॉइंट. आपको इक्वेशन बनानी है इस लाइन की जो कि इन दो पॉइंट से, इन दो कोऑर्डिनेट से पास थ्रू होती है. कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1. x1 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू पुट करेंगे, y1 की वैल्यू पुट करेंगे, y2 की पुट करेंगे. ये इक्वेशन रह जाएगी दो वेरिएबल्स में, x और y वेरिएबल्स में, विच इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, वही निकालना है हमें. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू 1,2 एंड हैज स्लोप इज इक्वल टू 3. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है एंड स्लोप है इस लाइन का 3. इट विल बी y माइनस y1, इट्स अ 1 पॉइंट फॉर्म. ठीक है, और स्लोप दिया गया और एक पॉइंट दिया गया. सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. ये अभी हमने देखा 1 पॉइंट फॉर्म. ठीक है, सो y माइनस, व्हाट इज y1 हियर? 2. सो y माइनस 2 इज इक्वल टू m is 3 multiplied by x minus x1 क्या है? 1. So y minus 2 is equal to 3 into x minus 1. So y minus 2 is equal to 3x minus 3. 3x minus 1 is equal to 1 is my answer. ठीक है, ये हमने कर लिया आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सारे बेसिक्स पढ़ लिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के. अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, शायद आज शाम को ही मिलें, तो हम कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एडवांस लेवल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के. ठीक है, मैं सेशन खोलता हूं फॉर एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, नेक्स्ट 2-3 मिनट्स. कोई भी स्टूडेंट अगर लाइव अटेंड कर रहा है, को किसी भी प्रकार का डाउट है IIFT को लेकर या NMAT को लेकर या अपन का SIBM का जो एग्ज़ाम होता है, SNAP या ZAT या any other doubt related to any other topic, please let me know. Have you took CAT? Yes, Vinay, I did. Have you taken CAT? Yeah, I understood. So CAT 2019 कह रहे हैं या वैसे ही जनरली आप कह रहे हैं CAT? मैंने कभी लिया नहीं लिया, वैसे दोनों ही करा है मैंने. CAT 2019 भी लिया है और अपन का CAT था CAT 2015 में, when I was preparing for my own entrance exam, CAT exam, and I got into MDI Gurgaon in 2016 और मैं ग्रेजुएट हुआ MDI से 2018 में. Anything else you want to check with me, Vinay? Yes, 2019. I took 2019. So a lot of educators take CAT, but mind it that when we fill in the application for CAT exam, we don't mark the colleges.
ठीक है, अपन सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम देते हैं और कॉलेजेस मार्क नहीं करते, ताकि क्योंकि अपन ने तो एमबीए कर लिया है, कॉलेजेस मार्क करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने एमबीए अब आगे नहीं करनी, तो हमारा स्कोर कहीं कंसीडर ना हो किसी एप्लीकेशन में किसी भी कॉलेज में, सो वी मेक श्योर कि हम वो कॉलेजेस का टिक नहीं करते. Wait, okay, you want to post something, you want to ask something, okay, I'm waiting here. But yes, I took CAT 2019. In slot 2, one question was on tetrahedron. Actually, you once told me that height formula. अच्छा अच्छा, या आई रिमेम्बर, मैं भी स्लॉट 2 में था, सो ऐसा कुछ क्वेश्चन तो आया था. राइट, पिरामिड का कुछ सवाल था, राइट, ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ऐसा कुछ आया था, आई रिमेम्बर. चलिए, अच्छी बात है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके काम का आ रहा है. आई एम ग्लैड दैट इट हेल्प यू, बट आई होप दैट आपको फॉर्मूला याद था और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए और सॉल्व कर पाए और आंसर मार्क कर पाए. चलिए, बहुत बढ़िया. आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी दैट व्हाट आई टॉट यू एक्चुअली हेल्प्ड यू इन एक्चुअल एग्जाम. ऑलराइट विनय, चलिए, बहुत बढ़िया. अब मिलेंगे शाम को, आई थिंक 4 बजे क्लास शेड्यूल करूंगा मैं यूट्यूब पे, यूट्यूब सेशन, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स अपन ने कर लिए हैं, कुछ एडवांस लेवल टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे. दिव्यांश ने अभी सेशन ज्वाइन करा है, ही सेज हाय. हाय दिव्यांश, वी वर क्लोजिंग द सेशन नाउ. If you have any specific queries, let me know. No, Divyansh, I'm closing. Someone else will take up the session now at 12:30. My session is done with. I started at 11:30 through 12:30. I'm going to be coming online again on this YouTube channel at 4 o'clock today. Okay, so if you want to connect with me, that is, ask me any question, you can come back at 4 o'clock. This particular session is over. The other one is starting in next 2 minutes. So I'll have to log out so that the other educator can join in. Okay guys, thank you so much for joining. Let's connect again at 4 o'clock on this same channel, YouTube. Goodbye and good day. Yes, Divyansh, it's recorded. You can watch it as a recording later. Okay? Chaliye, goodbye.